Greetings, ladies and gentlemen. This is Annie Miraj Kitwai. I hope you all are doing wonderfully well and taking great care of yourselves because you deserve this. To know more about me, please check out vertexthesolution.com. So, today, what I'm going to talk about in this particular video here, I'm going to talk about the individuality of a woman in India, specifically in the Indian society. Now, please do not take it personally on yourself because I'm going to be really blunt. No matter from which place you belong to, no matter from which kind of a background you belong to, no matter from wherever you belong to, my dear women, and my friends, of course, at the same time. I would like to highlight few things here to make you understand that how important it is to find your own individuality and creating your own self, your own identity as a person, as an individual. It's very important in this particular society where we live, right? Now, I'm not talking in terms of communities or religions or castes or cultures or traditions. I am a traditional person myself too. I respect all cultures, all religions, all castes, everything I respect. But at the same time, I do feel for women specifically to some extent who are being suppressed, or I would say brainwashed for their own individuality or identity as an individual or a person, which is, I would say, the society's flaw, the thinking of the society in general, or post-marriage or pre-marriage. There are so many articles, awareness campaigns did by governments and individual entities on women empowerment and supporting the girl child. But still, there are few basic understandings in terms of domestic relationships, or I would say relationships in your personal sphere of life, which you may not able to understand. Or I would say you are being controlled in a very polished way so that you can work for other people to support their life, their aspirations, their inspirations, their motivations, and you should sacrifice on your own wants and desires. So definitely, we already spoke a lot about women empowerment and girls should be the leaders. I've written blogs over it as well. A part of it, what I'm trying to talk about here, is this brainwashing technique happens on women, specifically whether they are daughters, their sisters, their wives, their daughter-in-laws, for sacrificing or compromising on cost of their happiness, individuality, identity for other people. This should not be there. This should not be there. So, of course, I'm a woman myself. I'm not yet married. But I've seen people, my friends who are married. I've seen people in the society close to me who are married, my relatives, my siblings. And I've seen working women, homemakers, everybody, right? All sorts of people, women, specifically I'm talking and addressing women here, that all sorts of women I've seen, working, non-working, students, or who are on a leadership positions, my friends, my family, people close to me, and in my social circles, in societies, or on a daily basis where I meet. So whether you are a working person or you're not a working person, you need to understand that
Your individuality, your happiness, your wants and desires are extremely important for you. And that is what self-worth realization and self-respect is all about. Now, what do I mean by this? At times, I've seen this in the society that women have been asked for not to work, for instance, or अब आगे पढ़ के क्या करना है, इतना तो तुमने पढ़ ही लिया है, अब पढ़ लिख कर इतना क्या करना है, कितनी डिग्रियां तुमने हासिल करनी है, फॉर इंस्टेंस. इतना परेशान होने की, माइन्यूट सी सैलरी के लिए तुम्हें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, काम करने की क्या ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वर्किंग एट अ 20,000 पे स्केल, 30,000 और 40,000 पे स्केल, फॉर एग्जाम्पल, और आप कुछ उससे अपनी पॉकेट मनी निकाल लेते हैं, या आप अपनी कुछ आपको किसी अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, उसके लिए आप एक डिसेंट वे में कोई ना कोई काम करते हैं, घर से काम करते हैं, या फिर कहीं जाके आपने कोई छोटी मोटी जॉब ज्वाइन की होती है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स हैं, आप बैलेंस भी चाहते हैं कि घर पर भी सब लोग खुश हो जाएं, और आप बाहर भी काम करते रहें. तो आपकी उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि येस, आई हैव अर्न सम मनी बाय माई सेल्फ, आई कैन ऑल्सो डू दिस. मेरे अंदर भी कुछ टैलेंट है, मेरे अंदर भी कोई स्किल्स हैं, मैं भी कुछ कॉम्पिटेंट हूँ, मेरे पास भी एजुकेशन है, मैं भी ज़िंदगी में आई कैन अर्न सम मनी है, मैं भी कुछ 4 पैसे कमा के घर में ला सकती हूँ, या मैं भी कुछ कर सकती हूँ. सो एक आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है वहाँ पर, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, जो कि इनसिक्योर जो लोग हैं आपके एतराफ़, आपके आपके आसपास, उन्हें पसंद नहीं आती ये बात. तो वहाँ पर लोगों का आपको कंट्रोल करने के लिए मैनिपुलेशन बड़ा शुरू हो जाता है. ये बहुत आम बात है, ये बहुत कॉमन है. एंड आई वुड से कि चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप मैरिड नहीं हैं, चाहे आप के पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं, या फिर आप कहीं शादी करने जा रहे हैं, या आप शादी में हैं, या आप एक मैरिड वुमेन हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी डिज़ायर्स और वांट्स को, डू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड. Because agar you will not feel happy, you will go into depression, you will fall in the trap of mental health, you will slowly and gradually feel deteriorated by the people around you, to suppress you, to not understand you, to control you, to manipulate you, so that you act around as they want you to act around. और आपकी कोई खुद की डिसीजन मेकिंग नहीं हो अपनी लाइफ के लिए भी, और घर में भी, आपकी फैमिली में भी कोई इनपुट्स आपसे नहीं लिए जाएं, आपकी कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं है, आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं है, सो सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी देयर. For that, it's very important, no matter at what pay scale you are working, no matter what kind of a job you do, no matter you're working from home, you have joined some kind of an office, some kind of a service, working on a leadership role, well enough. So ये भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी leadership role पर हैं, आपका career बहुत strong है, but you're ignorant to your personal life. I mean, डिमांड्स ऐसी हैं, लेकिन बैलेंस होना चाहिए लाइफ के अंदर, थोड़ा तो बैलेंस होना चाहिए. ये भी नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम्स में नहीं होना चाहिए कि आपको अपने घर की केयर ही नहीं है, आप अपना घर बार छोड़े बैठे हैं, बिल्कुल इतना ज़्यादा आप ओवर एम्बिशियस हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पेरेंट्स की तबीयत ख़राब है, आपको ये पता ही नहीं है कि आपके बच्चों के स्कूल में मीटिंग थी, आपके बच्चों का स्कूल में ड्रामा था, आपने अटेंड ही नहीं किया, आज तक कोई पेरेंट टीचर मीटिंग में ही नहीं आप गए. तो ये भी नहीं होना चाहिए. और ऑन द सेम ग्राउंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी खुद की कोई चॉइसेस, इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंस आपके पास नहीं है. So this is what I want to convey in this particular video for women specifically, that you need to understand that your individuality, your independence, your happiness
does matter for you, and never ever give it up for anyone. If they're asking you to give it up, they're not your people. They are asking you to make compromises on your happiness, on your health, financial health, mental health, or any sort of a health, to make other people successful for their objectives and aims, you need to work as a unit, whether you are a married person or you're not a married person. Whatever be the condition is, whatever be the situation of your life is, you have to work as a unit. You need to support each other. एक emotionally balanced relationship होना चाहिए, where you both are supporting each other in a very balanced way. You are also feeling happy for their accomplishments. वो भी आपकी accomplishments और success के लिए happy feel करें, आप भी happy feel करें. थोड़ा आप उन्हें support करें, थोड़ा वो आपको support करें. This is how things move forward in life, and this is how happy people live their life. कहीं पर आपको control और manipulations की ज़रूरत पड़े, that is not a healthy relationship. That is a toxic, controlling, and a manipulative relationship where people are keeping secrets from you to hold you back from, living your life or having a accomplished life, a confident life, जहाँ पे आप में self worth issues develop हो जाएं, self esteem issues develop हो जाएं, आपके अंदर confidence की कमी आ जाए. इस तरह के relationships को आप avoid करें. और अगर इस तरह के रिलेशनशिप्स बाय बर्थ आपके साथ हैं, तो वहाँ पर आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें और जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखें. Because they are going to affect you badly. They are never going to realize this, and you need to, draw boundaries with certain kind of people and move forward in your life with confidence, with grace, with an attitude, a positive attitude that yes, I am also something, I can also do something, I can also accomplish something in my life. I am not dependent on anybody for anything. Rather, I am that kind of a person who is able to provide help and assistance to people in need at times. तो अपने आप को जब हम इस तरह से mold और develop करें, भले ही आप कोशिश करें, I'm not saying कि आप एकदम से you should be on top of everything, top of the mountain, Mount Everest पे आप चढ़ जाएं. इसको सक्सेस नहीं कहते. सक्सेस वो है जहाँ पर आप अपनी वर्थ को समझें, अपनी सेल्फ वर्थ को समझें, अपने अंदर एक डिग्निटी क्रिएट करें, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर हो. किसी से आप किसी चीज़ के लिए बेग नहीं करें, इमोशंस के लिए भी नहीं और चीज़ों के लिए भी नहीं. एक रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी हो जहाँ पे लोग आपकी भी इज्जत करें और ऐसे लोगों के पास उठे बैठें. दोज पीपल हु रिस्पेक्ट यू, योर स्किल्स, योर टैलेंट, योर पर्सनालिटी, एवरीथिंग अबाउट यू. जो लोग डिसरिस्पेक्टफुल हों आपसे और आपसे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की एक्सपेक्टेशन रखें, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी डिसीजंस या चॉइसेस अपनी मर्ज़ी से ना ले सकें. इट्स अ स्लेव मेंटालिटी. सो ये स्लेव मेंटालिटी अच्छी नहीं है, राइट? हमने जो है स्लेव्स और ये सब चीज़ों को बहुत ही साल पहले छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया. इन चीज़ों को आगे निकल आए हैं हम लोग, राइट? सो वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम आवर पास्ट, राइट? हमने मोनार्की से हम डेमोक्रेसीज़ में आए हैं जहाँ पे हर एक इंसान को जीने का बराबर हक है. इनफैक्ट जहाँ पे अब मोनार्कीज़ हैं भी, वहाँ पर भी दे आर वर्किंग डेमोक्रेटिकली. तो इंडिविजुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है. एंड फॉर women, it's very important. If you will be educated, independent, confident on yourself, your children will also be independent, confident and successful in their lives. तो अगर आप अपने बच्चों की सक्सेस चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, उन्हें मजबूत बनाना चाहते हैं, तो पहली शुरुआत अपने आप से कीजिए. अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए, मजबूत बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, एंड डेफिनेटली आपकी फैमिली आगे जाके अपने आप एक स्ट्रॉन्ग फैमिली
में तब्दील हो जाएगी. I hope these words of clarity and motivation help and guide you somewhere. And thank you so very much आपके emails और messages के लिए. आप अपनी बातें मुझसे कहते हैं, शेयर करते हैं, messages लिखते हैं, मुझे appreciate करते हैं. मैं उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ. Thank you very much for your appreciation. Keep subscribing, viewing this channel and supporting me. Have a great day.